guys, Assalamu alaikum. I'm Sarfraz from YPay and this is Hamza and Naureen. Welcoming all of you to the first pilot episode for YPay Kahani, which is a podcast that we've started. उसके अंदर हम इंडस्ट्री के जो जाने माने लोग हैं उनको हम बुलाते हैं and we take their opinions and their feedback of the fintech industry primarily and also learn a little bit about their journeys. Assalamu alaikum guys. Thank you for joining us on the pilot episode. Thank you so much for having us. And of course the audience knows you guys very well, but it would be great if you can give a brief short introduction about yourself. Oh man, acha. Do you want to take the stab and kind of do the... Naureen and I started working together more than 10 years ago. We met at this place called PACRA, which is the Pakistan Credit Rating Agency. When we were in the rating agency, one of the sectors that we rated was called microfinance. It was while rating the sector, we kind of thought कि यार microfinance के ऊपर जो है ना, typically कहा जाता है कि यार it's enablement for the poor customer, right? Or someone who's in the lower economic segment. Yet the criticism is that there's a really high interest rate that's charged to them. So typically this is about 35 to 40%. Why is that there? जब top gun from a corporate आता है borrow करने उसको K+2 पे मिलता है, इन लोगों को K+10 पे मिल रहा होता है, right? So why is that differentiation there? And when we kind of dove into that, we found out that the cost of doing business for microfinance is really high. So of that kind of 35%, about 15% is allocated to your operating cost, about 12% is allocated to your cost of funding. That makes what 27%. There's a 3% roughly cost of provisioning, bad debt, etc. And then there's only a 5% margin, which is really normal, right? It's more of a sustainability margin than a profit margin, right? जब हमने ये चीज़ देखी तो हमने कहा कि oh, maybe if we introduce technology and bring down the operational cost, we can actually make the sector more efficient. And I think that's when we went down the rabbit hole, kind of figuring out कैसे technology किस तरह से introduce की जा सकती है. This is back in 2014, and then Naureen and I, we kind of set up our first startup called Check-in Solutions, which was an absolute bust, but a fantastic learning experience. बहुत हाथ पाँव मारे. We met everyone in the industry, but I think the industry was at a different point in time back then. Regulatory changes आ रहे थे and so on and so forth. It was during that time where kind of when we started off, it was very much focused कि यार technology introduce करेंगे और business बन जाएगी, and not realizing what it really takes to set up a company. And I think that's what kind of went down and eventually transformed into Tejas Financial Services. We met our third co-founder in Nadeem, and then the rest is history. So always it's always a good experience hearing from the person who is actually running the show. Is there any different take from you? Yeah. I think the official version यही है. Unofficial version में बहुत रोए थे. हाँ, under the cover background में क्या हुआ, behind the curtains वो तो एक और story थी. Crash and burn every. Actually पता है, this is the pitch story, right? बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो actually you don't get to share them too much because you're so focused on just selling the right story that you at times you just tend to not talk about the interesting. Well, I'd say that they're the points that add character to a story. Are you going to talk about the fundraising? Yeah, I'm going to talk about that. So actually, जब हमने शुरू किया ना check-in, and this is actually very very related to you guys. YPay यहाँ savings और investments क्यों important होती हैं actually. So when we started check-in, we left our 9 to 5 तो कभी ख़त्म नहीं होता था, but our official job, corporate job, and जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी उस वक्त हमने कहा यार चलो इनके साथ लेट्स टेक अ स्टेप. ठीक है, अब जाहिर है सेविंग्स इस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा नहीं थी एंड कंपनी से कमा कुछ नहीं रही थी. सो लिटरली थोड़ी सी कंसल्टेंसीज थी जो हमारी थी, बट वी वर लिटरली कंज्यूमिंग द सेविंग्स दैट वी हैड. फिर वी वर आल्सो बूटस्ट्रैपिंग. सो हमारे जो फ्रेंड्स थे उनके ऑफिस से हम काम कर रहे थे, शुरू में घर से काम कर रहे थे. ऑन एंड ऑफ दिस इज हाउ इट वाज गोइंग. I think there was not even an NIC back then. Maybe लम्स में social entrepreneurship at center था, but yeah. So this is back in 14-15 लॉन्च में था एक कुछ. फिर what happened was कि हमने कहा कि यार चलो पैसे रेस करते हैं. They say one of the most common means of angel investing कहते हैं, friends and families. वो होता है यहाँ तो अब लोग BC के नीचे बात नहीं करते, ये फंडिंग आ गई पाकिस्तान में. But what we did was we said कि चलो हम करते हैं कि friends and families में पैसे मांगना आसान नहीं है, It's much more difficult. I personally believe it's much more difficult because having been through that, एक angel investor या एक VC investor is someone who doesn't know your background. Friends and family knows आपने जिंदगी में कितने हसल बसल सारे किए हैं, वो उसको एक unofficial version भी पता है. Dignity पता नहीं element of dignity भी शायद आ जाता है बीच में. For sure. तो then we said कि यार बजाय से कि हम अपने friends और family से पैसे मांगें कि आप हमारे vision में invest करें,
let's do something interesting. लाहौर में, पाकिस्तान में जनरली, बट पंजाब में सबसे ज़्यादा जो लोग स्पेंड करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट और खाने पे. So हमने कहा चलो एक फन फेयर करते हैं. It started off as a dinner. Yeah, it started as a dinner. हमने कहा कि एक डिनर करेंगे और हम कहेंगे कि इस डिनर का जो टोकन है ना वो है 1000 रुपीज या 2000 या 5000 रुपीज का है और हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुलाएंगे एंड उसके ऊपर it started, we then did something like an arts and culture fair. जहाँ फला हम literally रोए थे हम उसमें. We got in touch with different brands to come and arts and culture related. क्या वाके अपने brands अपने stall set करें और खाने के brands. And you know people could come and they had to pay an entrance, which was actually where we earned from. And we also earned from the stall. मुझे याद है शुरू में जब हम पहले ब्रांड के पास गए तो हम क्यों स्टॉल खड़ा करें, आपका कोई बैकग्राउंड तो है नहीं, किस लिए हमने कहा ट्राई करें. We started off with 15,000 rupees a stall. I remember by the end of it ये सारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी खुद ही तो बस इन सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं पता फेसबुक वगैरह कैसे करते हैं. बट we made the posts ourselves, everything we did ourselves. ऐसे सब कुछ ही थे हम all in one. By the end of it, the last stall actually went for double the price because there was so much demand. You know, we created the hype for it. ये startup ये करते हैं ना, hype बहुत अच्छी create करते हैं. Everything was bootstrapped. Everything was bootstrapped. Like rental से लेके help. Like we had our friends kind of झाड़ू दे रहे थे, cutting कर रहे थे. And you know the end result was that हमने जितनी capital investment की इस fund fair के अंदर, we created a 7 times return. That held us for like I think close to a year. That kept us afloat for close to a year. Where you know despite the fact that we weren't necessarily taking salaries, but जो business expenses थे सारे वो उसके through हमने निकाले थे. So really kind of you know really did bootstrap the first time around. We managed our cash flows also, जो भी savings थी. I remember जब तेज शुरू हुआ and started getting our first salary from तेज, जो वो भी छोटा amount था because you know वो भी अपना ही startup. There's a pride. एक salary आ रही थी थोड़ी बहुत जो भी थी. My bank account शायद 10,000 rupees left. You know 2 साल चलाया अपनी savings को बगैर earn किए. That's how it was. But I think that it was like the great thing about it was that there was a lot of like we had family to kind of at the back, right? So उस तरह से घर का रेंट नहीं पे करना पड़ रहा था, रात के खाने के पैसे नहीं पे करने पड़ रहे थे, एट टाइम्स गाड़ी का पेट्रोल नहीं डालना पड़ रहा था. तो ये बहुत प्रिविलेज्ड था. How the first time founders don't have a lot of capital, शुरू से you have to have a lot of support system. Absolutely. Before you are starting out. Absolutely. I think बाबर ने हमें क्या तकरीबन 1.5 साल ऑफिस में फ्री बैठने दिया है, राइट? फ्रेंड ऑफ आवर्स 1.5 साल उसके ऑफिस में बैठे, मीटिंग रूम इस्तेमाल की, चाय पी, प्रिंटर, इंटरनेट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? So my friend Babar and Mapara, they own, so they're in the textile business and bridals का काम है. Literally हम financial services कर रहे होते थे, पीछे silhouettes लगे हुए थे कपड़ों के. It was like, but it was an amazing experience because Absolutely. we got to learn so much from them also. So fast forward to today, so 2022, the startup ecosystem in Pakistan. What's your take on the startup ecosystem? Why don't you take a stab at this first and then? The evolution has been astounding. जब हमने शुरू किया था, पता है मुझे अब थोड़ा सा ना अजीब लगते हैं terms अब startup, entrepreneur. I don't know. I find I'm sorry, without any offense to anyone, I find it very superficial for some reason. But the truth is कि ये जो ecosystem है, it has just jumped leaps and bounds. आप हर जगह की बात करें, you talk about the investment that is coming in, to the kind of startups that are coming in, to the kind of skill set that's coming in. So आपके entrepreneurs भी बेहतरीन लोग आ रहे हैं जो आइडियाज ला रहे हैं. आपके पास अब इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेस में. एंड ओवरऑल द इकोसिस्टम हैज इवॉल्वड सो मच, एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है. I think the biggest change that's come in is mindset, right? And it's mindset of everyone in the ecosystem. So जिधर आप अपना business खड़ा करना चाह रहे थे, and at least from peers, extended family, like there was like, यार, are you like really like why don't you work for Fatma Fertilizer or why don't you work for Engro या बैंक में नौकरी कर लो, something to that sort, right? पता है डिफरेंस क्या हुआ है? For example, जब हमने शुरू किया था, जो पहले बाबर and Mapara have been replaced by the NICs. Yeah. The angel investors or our savings have been replaced by VC funding. Or angels, और yeah. कारण था तो अभी भी है, but they've been replaced by the likes of VCs and angels. पहले बैंक जाते थे, हमें कोई 9 महीने लगे अपना पहला बैंक अकाउंट खोलने में. This is check in के टाइम पे. अब जब वो पता चलता है कि आप बाहर से आपकी फंडिंग आनी है, तो वो पीछे भाग रहे होते हैं कि यार किसी तरह से आप वो खोल लें. आज का एग्जांपल देती हूँ. हम लोग भाग रहे होते थे बैंक के पीछे, अब मीटिंग दे दें प्लीज, टाइम दे दें. आज literally we got a call from a bank that we've heard about your solution, we want it. So ये change आ गया है. How difficult was it to maintain a balance between
like personal finances जो काम के finances होते हैं they get merged completely. Your personal bank account becomes your work bank account. Correct. How difficult was it? कोई saving हो रही थी उसमें या कोई investment थी? और अब how is that different now? How are you managing your finances? So I think I'll speak about myself. So I think one thing that I think owed to my father, since the beginning, he's always kept like a very tight leash in terms of me having access to cash, right? And he's gonna hate me for saying this, but मैं अमेरिका गया पढ़ने, मैंने ना अपनी first time यूनिवर्सिटी पहुंच रहा था. मैंने किताबें लेनी थी, पलंग के लिए मैंने मतलब कंफर्टर लेना था, तकिए लेने थे, सेटअप करना था. मुझे नहीं आइडिया था कि क्या खर्चा होगा उधर. नाइफ था मैं बिल्कुल. तो मेरे डैड ने मेरा फायदा उठाया और मुझे $200 पकड़ाए. $200 पकड़ाए जिसमें से this is back in 2012, so not too long ago but long enough, right? But that when I got there and I realized कि एक किताब जो है वो $70-80 की आ रही है, तो मुझे समझ आया कि ये होना क्या है. And for the first 4 weeks, it was just like it was crazy. Like the amount of borrowing that I did during my college years is just ginormous. और वो मेरी दादी जो हैं और मेरी एक पुप्पो हैं वो अमेरिका में ही होती थी उस जमाने में. तो I would like constantly keep calling them like month after month, being like अच्छा मुझे सिर्फ $100 भेज दे, मुझे अच्छा $150 भेज दे. To kind of manage that cash flow. I think that period taught me a lot about value for money. And so when I moved back to Pakistan, I think I was mentally focused on kind of ensuring that from every paycheck, I put some money aside. And I think that was really helpful. And I think being in Pakra, because I did not know ke saving kaise karta hai. I thought just putting cash aside would be saving. Being at Pakra, which is a rating agency, the exposure I got to like the avenues of investments that are available was huge. So I understood ki yaar, what is the difference between a PIB and a T-bill? Tax jab karta hai to TDR पे क्या टैक्स कटेगा और आप रेगुलर सेविंग्स रेट पे क्या तो कैपिटल गेन्स पे क्या इम्पैक्ट आता है एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड क्या होता है म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट मिलता है ऑल ऑफ दीस थिंग्स सो आई थिंक दैट एनवायरनमेंट रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड ए व्हाट टैक्स एफिशिएंसी इज बी अंडरस्टैंड इफ आई वांट टू पार्क माय मनी वेयर डू आई पुट इट एंड सिंस देन I'd say I've been reasonably active as a saver and I've constantly tried to keep building up my savings pool. That savings pool was like a life savior, right? In those 2 years 14, 15 and most of 16 when we were not earning any money, blurred personal expenses and financial expenses, absolutely. I think that really helped me. And then so today, I'm very, very conscious of putting money aside. And it's not like Tez's journey has been super easy. We've had our own kind of financial crunches throughout that. And I think, that mindset really helped. And Naureen's going to probably share a story which is going to really embarrass me from our earlier days. But, the ability to understand what to save, how to save जो है ना बड़ी important है. And I think that's missing. Mindset नहीं है. आपको कल्चर encourage नहीं करता. I don't know नीना, but देखो कमिटी जो है ये तो culturally है. गोल्ड की इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के लिए नहीं ज्यादा यूज हो रहा था. What is it? बोरिंग के लिए यूज हो रहा था. नहीं देखो आप मेरी बहन की शादी हुई, माय मॉम वाज एडमेंट कि यार उसको गोल्ड देना चाहिए. क्या है कि उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी सेविंग होगी, ये होगा वो होगा. कह रहा हूँ कि उसको कैश दे दे. नहीं वो दे. कुछ माइंडसेट में वो फंसा हुआ है. डली होती ना कुछ ना कुछ एंड में खरीदने के लिए डली, कंजम्पशन के लिए डली. But that's what कुछ बहुत कम है जो you're actually saving for an emergency for example or maybe education. वो भी होता है. But it's just that consumer mindset बहुत ज्यादा है. But yeah, I think गाड़ी के लिए है, फ्रिज के लिए है, टीवी के लिए सेविंग है. इम्पोर्टेंट है. मतलब एक और बात ये है कि कमेटी के अंदर आप जो है ना लॉक भी हो जाते हैं ना. अगर आपने एक फॉर सेविंग्स आपकी बारी लग गई, आपने पैसे निकाले तो आपने जो भी चीज लेनी थी ले ली. अब यू आर बाउंड फॉर द नेक्स्ट 6 months or something. Whatever the term is. That you're actually 3 times the chance of saving increases by about 3 times when you save in a committee. Yeah. So most interesting facts, but yeah, that's absolutely. Financial issues nahi the, but my mother always taught us कि यार shouldn't be wasting. फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं. I think mothers have a very important role to play, and we saw her also the way she spent money and the way she spent. That had a direct impact on how we also thought about it. So I think वो चीज़ हमेशा से थी. She always encouraged saving. खुद करती थी, हमने उनको देख के किया. So I think by the time I started working, जो पैक्रा में जब शुरू किया उस वक्त पैक्रा में सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती. तो ये होता था कि जो भी होती थी थोड़ी बहुत सैलरी. मैंने एक्चुअली स्टैंडर्ड चार्ट में 2 अकाउंट बनाए, दोनों सेविंग्स अकाउंट. ये मेरा तरीका था उसका सेव करने का, जो भी थोड़ा सा था. शुरू में जैसे सैलरी आती थी आई यूज्ड टू ट्रांसफर अ पोर्शन राइट अवे इनटू द अदर अकाउंट. उसका डेबिट कार्ड में साथ नहीं था. वही तरीका था सेव करने का.
और फिर आस्ता आस्ता करके जाहिर है जैसे सेविंग्स बढ़ी, डिफरेंट एवेन्यूज में देखा। एक तो मेरा बहुत बुरा एवेन्यू उसका में जब बहुत बड़ी हिट पड़ी थी, मैंने ना ये म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो नौरीन देखी कहा अच्छा मैं भी, और एक दो महीने बाद उसने देखा कि यार हमारी सैलरी सेम थी मगर मुझे टैक्स बेनिफिट की वजह से ना टैक्स बेनिफिट नेट बेहतर मिल रहा था। टाइम है जब आपकी स्टॉक मार्केट बहुत ओके हाँ, तो वो एकदम से देखा कि यार मतलब अगर रेगुलर रेट पे आपको 7-8% रिटर्न मिल रहा था TDR के ऊपर, तो मुझे जो है ना कोई शायद 24-25% मिल रहा था, राइट। दिस इज द रैली टू 50,000, राइट, रैली टू 50,000। तो 48,000 या 49,000 पे नौरीन ने कहा कि यार मैं भी ना स्टॉक मार्केट वाली साइड पे पैसे डालती हूँ। बट तुमने स्टॉक में डाले थे या एसेट एलोकेशन में? मैंने स्टॉक मार्केट में शुरू में डाले। अच्छा, स्टॉक मार्केट में शुरू में डाले। अब वो 50 पे पहुंचा, ले 2 महीने आपको कैपिटल गेन नजर आ रहा था, उसके बाद फिर वो टैंक किया। अब वो जब टैंक किया तो नौरीन ने पैनिक किया और फिर दोबारा उसने पैसे हटाए एंड फिर पैसे फिर मनी मार्केट में डाले, एसेट एलोकेशन में डाल दिए। अब वो रिकवर नहीं हो सका। फिर दोबारा बुल रन आई। जब बुल रन आई तो मेरा जो भी वो माइन्यूट सा टाइम पीरियड का लॉस था वो तो मेरा रिकवर हो गया। इसके वो पैसे जो है ना मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेविंग्स भी ना आपको अपना एप्टीट्यूड देके करना है। एब्सोल्युटली स्टॉक मार्केट, इवन म्यूचुअल फंड्स, यू कांट बी पैसिव इन्वेस्टर्स इन अनलेस यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन ब्लू चिप स्टॉक्स। चुप करके आप भूल जाए, दैट्स अनदर थिंग। बट इफ यू एक्चुअली वांट टू प्ले ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन्वेस्टर। मैं एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं लेंडिंग में भी हूँ, बट आई एम वेरी रिस्क अवर्स, और मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मतलब आई डोंट नो वो क्लास ये कुछ है मसला बट पॉइंट इज कि आपको अपनी एप्टीट्यूड भी देखना ना, किस तरह की सेविंग आपको सूट करेगी। इंडिविजुअल, सो व्हाट आई हैव सीन इज एवरी इंडिविजुअल हैज लाइक उनके अपने गोल्स होते हैं, उनकी अपनी एक प्रोफाइल, एपेटाइट के हिसाब से अगर वो बंदा जो है वो अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है तो वो समझना भी जरूरी है। बिल्कुल, वो उसको आप पहले समझो, उसके बाद उसको समझ के आप उसमें एलोकेट करें उसके हिसाब से। पर सरफराज, हम लोग, मुझे याद है मैं जब शुरू तेज में ना हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हम लोगों के जो टीम मेंबर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ देम डिड नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अ करंट एंड अ सेविंग्स अकाउंट। या दैट वाज अ बिग लर्निंग थिंग फॉर हम लोगों को सिखा रहे थे क्या होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे होता है। लाइक वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टीम मेंबर हु केम टू अस एंड ही इज लाइक, अच्छा ये भी होता है बैंक पे, है बैंक मुझे पैसे दे सकता है, so ये चीज बैंक तो बताते ही नहीं है ना। They are not in the business of letting people know, educating. So I love talking to bank assurance people, right? Because they come in and they say, सर मैं आपको बताता हूँ ये जो है ना 5 साल के बाद जो है ना, हाँ no absolutely no, but like मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना ये 10-20 साल के बाद ना आपको हम डबल ट्रिपल 10 टाइम्स कर देंगे। मैंने कहा यार अगर ये 10 टाइम्स हो सकता है मुझे लिख के दे दो। नहीं, वो लिख के नहीं दे सकते। फिर मैंने कहा फिर क्या करना चाह रहे हो, अगर मैं 3 साल बाद पैसे निकालूंगा क्या होगा? तो यही नहीं बताते कि यार पहले 5-6 साल में आपका लॉस हो रहा होगा, then you break even onto your policy, then you start accruing in capital gains on that policy. Education is a huge role to play in this, and I think like Naureen said, like in our team, I think one of the huge shockers for us was that they didn't know you can get interest. They didn't know why the bank was deducting charges. Uska fayda bhi tha, unko nahi fayda tha. That kind of education is very important, and I think for us it was really good that we had like that grounding in Pakra, so that we were aware of the different types of avenues that are there and what each avenue, the risks it carries. And I've dealt in I'm more of I'm heavy into mutual funds, right? And I was heavier into mutual funds because tax benefit milta tha. Unfortunately, I think पाकिस्तान में सेविंग जो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, ऐसा ही है। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत, सेविंग तो तब आएगी ना जब फाइनेंशियल प्लानिंग। मैथ बड़ी पुअर है। बट आई थिंक दो वो उसमें ये है कि मतलब हमारे यहाँ जो है मैंने देखा है द यंगेस्ट ऑफ पीपल, समवन लाइक माय टेलर, वो फाइनेंस में अकाउंट खोले हुए हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रियली? कि जो है ना पीपल, आई थिंक द पीपल वांट टू शॉर्टकट लगा, वो डबल शाह वाला है ना, डबल शाह सुना? कुछ हाँ, डबल शाह एग्जैक्टली, वो पंजाब में जाता है। वो लोगों को ना उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, वो नहीं कि यार। So what's your view on this entire kind of, you're in the savings business, right? So what's your view on the entire crypto space? Because I guess I feel like I'm super conservative on that front. I understand the value of the technology. I don't understand the hype in which all of these coins are growing at. But what's your view? Of course, वही वाली आपका जो point है ना कि वो जो the hype that is fueling all of this industry efforts. कि basically जो मेरा अपना जो take है, I'm not very I understand the technology, and if I say anything against
crypto, people would be like, क्या यार इसको समझ नहीं है, बात में इसको समझ नहीं आती तो क्या है नहीं. Something के यार just like वो एक इलोन मस्क की बड़ी एक मशहूर ट्वीट थी, वो बाकी चली गई थी, लोगों ने बड़ा उसका एंटी वो एक एलिमेंट निकाला था. Don't put your money into cryptocurrency or into NFTs to as an investment option. Like play with it, explore it, understand it, try to derive value from it, but don't put all of your money as an investment option. Like जैसे म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे डाल रहे होते हैं उस तरह से आप नहीं डालते. Something that you're willing to, something that you're willing to करने like, आपका 95% पैसा जो है वो किसी एक प्रॉपर्टी किसी रियल एस्टेट में लगा हुआ है या किसी गोल्ड में पड़ा हुआ है या किसी स्टॉक में लगा हुआ है. 5% आप जिस पैसे को लूज करने की ताकत रखते हैं, हैसियत रखते हैं. So we had like really bad experiences, at least from a credit quality point of view, with the student segment, right? And of course, I think it drilled down to like two things, right? A, their income was routed through their parents, predominantly, for most students, and the other thing was that they weren't responsible, right? So they were going through a maturity cycle. They were not mature yet. So when we kind of saw our credit, if we look at age dynamics to credit dynamics, it's the 28 to like 45-year-old bucket, fiscally responsible, or at least knew the repercussion of not paying back a loan. Whereas the younger crowd, especially this 18 to 24 wala jo age group tha, who had not gotten a job as yet, right, or were still in university, they definitely demonstrated like poor credit quality for us. There are avenues of saving, but they haven't been innovative enough to attract smaller savings. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है. मेजॉरिटी लोग सेव छोटे अमाउंट ही कर सकते हैं. अगर आप बैलेंसेस भी देखो ना, बैंक अकाउंट्स या इवन वॉलेट्स वगैरह, तो जो एवरेज बैलेंस साइज बहुत छोटे हैं. सेविंग एवेन्यूज इनोवेटिव ऐसे होने चाहिए जो फ्रैक्शनलाइज सेविंग इन. तेज ने एक्चुअली इस पर काम काफ़ी किया था. वो अलग बात है कि हमारा फोकस क्रेडिट पे था, बट we saw here, this entire belt actually, and primarily, Pakistan, India जैसी countries, cultural heritage का हिस्सा है to saving, things like gold, committee, आपके tangible assets है at the end of the day, even real estate. मगर problem ये है कि बड़ी investments करना ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. Either because they don't have the liquidity, or they're not secure avenues नहीं है, fraud है, जो भी वो reasons हैं जो वो save नहीं करते हैं. पर अगर ये ऐसी सेविंग एवेन्यूज हों, जैसे वन थिंग दैट वी वर्कड ऑन वाज फ्रैक्शनलाइज गोल्ड, कि आप यू कैन सेव इन गोल्ड एज लो एज 100 रुपीज. तो वो सेव करना किसी के लिए भी आसान है. 100 रुपये साइड पे करना, जब लेट्स सपोज वो 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम पे पहुंच जाए आस्ता आस्ता करके, बजाय इसके कि उसको इस अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए साइड पे करना पड़े तोला लेने के लिए, वो मुश्किल है किसी के लिए. अब रियल एस्टेट में भी फ्रैक्शनलाइज सेविंग्स आ रही हैं. टी-बिल्स में भी वर्कड ऑन, वी कंसेप्शनलाइज अ प्रोडक्ट विद द बैंक. व्हाट डू यू गाइस लाइक थिंक अबाउट के लाइक एक तो जो आपका ऑडियंस के अंदर, एक जनरल ऑडियंस के अंदर एजुकेशन का थोड़ा सा एक लैक ऑफ एजुकेशन, एंड व्हाट अबाउट द लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी. सो यू आर एन एविड यूजर ऑफ म्यूचुअल फंड्स. I would call you a super user of mutual funds. What is the pain points in access that you have found in mutual funds? I want to understand because we are in the business of digitizing mutual funds. I'm still not up to speed on their digital platforms, right? Not for the lack of fact that I don't know how to use them. It's because I feel like for me to call up my, sales officer and tell him कि यार आके मुझसे check उठा लेना is way more easier than kind of going through the hassle of how digital experience is. It's still not a one-click solution in my mind, right? So the amount of paperwork that is required to A, go digital, B, the amount of effort that's required to then kind of generate your, I think वो IBAN generate करना पड़ता है, फिर आपको KYC अपनी पूरी complete करनी पड़ रही है, and so on and so forth. It's still not straightforward. It's still not like as easy as it should be. Opening a SIM is अंगूठा लगाओ, SIM उठाओ और चले जाओ, right? And I think investment should be as simple, one click and that's it. But I feel like that experience at the back end is missing. Front end पे तो बना लेते हैं, but जो back end processes हैं वही archaic है. उसी को वो प्रिंट करेंगे, फिर वो साइन करेंगे, जो भी करेंगे, फिर पीछे भेजेंगे. अभी मैंने ना सो अनदर मेंबर ऑफ आवर्स इज डूइंग लाइक स्टॉक ब्रोकर, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर ना वो कर रहा है फिन पॉकेट के नाम से. इट्स बिन लाइक 3 weeks. वो अकाउंट खोलने में ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है. मे बी इन 2012 में मैंने कहीं शायद एक एप्लीकेशन दी हो अकाउंट खोलने की और वो हाफ वे रुक गई थी. अब मैं जब दोबारा जा रहा हूँ, सो वो 3-4 हफ्ते हो गए हैं, वो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो पा रहा, क्योंकि the back end processes are not clean, and I think until those are clean, access जो है ना वो hindered ही रहेगा, and I think that discourages people to kind of go in.
I think my third point would be, I know liquidity बहुत improve कर दी asset management companies ने. They've issued debit cards कि आप इस्तेमाल करें, ये करें, वो करें, सारा वो है. But I think still it's not as seamless as a digital account is, right? And I think we are able to kind of do that, or if figure out like direct debits, हर महीने मुझे बगैर जो है 5,000 रुपए ऑटो फैसिलिटीज, ऑटो डेबिट फैसिलिटीज जब तक सेटअप नहीं होंगे तो वो रिटेल डिपॉजिट जो है ना वो इतनी इजीली से नहीं बनेगा. आई नीड टू स्पेंड like 25, so I spend about half an hour every month pushing and pulling money in for my investments, right? It should not even take me like 10 seconds. Yeah, right. So in my mind, I am calculating a checklist of things that we are actually doubling down. Okay. The education part, we are very active in the education part. Absolutely. दूसरा चीज़ ये जो आपने बताया ना कि ये जो एक डिजिटल चीज़ है वो सिर्फ टमी आगे नहीं होनी चाहिए, पीछे भी होनी चाहिए. So we are so every asset manager that we are doing it on a digital terms. So आपका account जो है वो जो सेम डे में खुल रहा है वो एक्चुअली खुल रहा है. नॉट जस्ट आपने डेटा डाल दिया, वो हमारे पास आ गया, हमारा ऑफिसर आपको फोन कर रहा है और वो आपसे सारी डिटेल्स दे रहा है. बिकॉज वी आर टारगेटिंग द फर्स्ट टाइम ऑडियंस एंड अ यंग कस्टमर. ऐसा कस्टमर जिसको इंस्टाग्राम जैसी एक फ्लूडिटी चाहिए या उसको फेसबुक जैसी फ्लूडिटी चाहिए. वो नया पे और सादा पे का यूजर है, वो जो है ना इधर इतना लेटेंसी वो बर्दाश्त नहीं. आज उसने अकाउंट खोला और 2 हफ्ते बाद उसको कॉल आ रही है, सर आपका अकाउंट भी खुलने में ये चीज़ें. एंड द थर्ड थिंग इज द ऑटो स्वीप फैसिलिटी, जिसके अंदर बेसिकली आपने एक दफ़ा अपना सेट कर दिया कि भाई मैं हर महीने इतने पैसे डालना चाहता हूँ, इतने महीने तक और इस जगह पर डालना. वो पैसे आपके ऑटोमेटिकली इट्स अ कंपाउंडेड थिंग ना कि आप अगर आपने एक ही प्रोसेस करना है हर महीने सेम फॉर द रेस्ट ऑफ योर टाइम, व्हाई नॉट ऑटोमेट? So we are also working on that. So there's a limitation from the banks. We have to go after every single bank. And right now we are working with a few payment gateways in Pakistan. तो उनके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक्स. तो उन बैंक्स के लिए तो हम लोग ऑटो स्वीप फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट कर दें. टू डू इट ऑन अ लाइक अ कंप्लीट स्केल यू हैव टू गेट रेस्ट ऑफ द बैंक्स. आपका what do you think are the pain points in investments, especially in लिक्विडिटी वाले एलिमेंट. और आई थिंक और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में आपको खुद ही अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, नॉट अ लॉट ऑफ AMCs, unless you have a good relationship with the relationship manager, not a lot of AMCs really guide you कि आपकी एपेटाइट के हिसाब से आपको किस तरह एलोकेशन करनी चाहिए. एक्टिव गाइडेंस नहीं है. आई थिंक यू आर राइट, एक्टिव गाइडेंस नहीं. हम लोग जब अपना सरमाया देख रहे थे, so one of the things that we thought that we make was asset allocation based on your risk profile, your risk appetite, your horizon. थोड़ी काफ़ी आई थिंक डेटा के बाद भी आती है. Probably it comes down the cycle when people have actually maybe built their financial planning journeys. But ये वाली चीज़ मुझे लगता है missing है. One of the other things I just want to kind of add on to this is, the entire यूनिट्स होते हैं, फिर उस यूनिट के ऊपर डिविडेंड मिलता है, फिर यूनिट की प्राइस गिर जाती है, फिर आपको वो बोनस इशू होती है. तो आई हैव अ फ्रेंड ऑन माय सेइंग हैज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स. जून का महीना एंड आया एंड ही काइंड ऑफ कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक, यार मेरा तो वो वैल्यू ही गिर गई है उसकी. मैंने कहा, यार ऐसा नहीं है, तुम्हें नया इशू हुआ होगा तो ओवरऑल वैल्यू तुम्हारी बड़ी होगी. उसको लाइक एंड ही इज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, बट इट टुक हिम like another good 15 minutes to really figure out के ये हुआ क्या है. तो yes, invest कर दिया, but then when these kind of shocks happen without you understanding, which is where the other education का part comes in, right? One is education कि आपको saving क्या है, दूसरा ये कि instrument क्या है, वो कैसे काम करता है. One thing that I want to ask you guys is what would you do? So there are two questions. एक तो पहली चीज़ कि what would you like from all of your journey, what is like a few of your experiences, उसके हवाले से आप क्या एक advice देना चाहेंगे for someone who's starting out, someone like me who has started out like बहुत अभी early stage. दूसरी चीज़ ये है कि if you have like a good amount of money right now, if I give you a good amount of money right now, how would you allocate it and in what avenues? पहले वाले पार्ट में ना लर्निंग्स तो बहुत डिफरेंट तरह की रही हैं. We can actually suggest. I think दो चीज़ें that I would suggest entrepreneurs who are stepping into this is, एक तो ये कि don't get into एक होती है fail fast innovation. A lot of entrepreneurs, they get too deeply
embedded in the idea of creating something that's perfect. So investment में बहुत ज़्यादा जाती है, time भी बहुत ज़्यादा चला जाता है. So fail fast innovation approach, try to come up with ideas that you can test fast and it has to be scrapped, it can be scrapped fast. दूसरी चीज़ ये है, जो एक चीज़ हमने सीखी टाइम के साथ, a lot of startups get into the conundrum of growing fast too soon. So I think वो समझना बड़ा ज़रूरी है. Unfortunately, I think VCs ने स्पेस को इतना growth focus बना दिया that a lot of startups miss out on fundamentals में यार growth numbers है, और top line में growth है, that's your measure of success. But well, that's my view, and I think I would speak for Hamza as well. Growth वो होनी चाहिए जो सस्टेनेबल है और जो आपकी अल्टीमेटली बॉटम लाइन सस्टेनेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करे. Adding on to one other element, I think purpose is very important, right? The rationale behind why you got into this business. If it's, if you got into like make $1 billion, then fantastic. Then, keep true to that purpose, right? But if you, and what we've seen is, ये cycles आती हैं, right? So we're going through a down cycle right now. Over here, maybe potentially like जो money makers हैं, वो अभी ज़्यादा नहीं आएंगे. But I think जो purpose वाले लोग आए हैं ना, जो कोई market में कोई change करना चाह रहे हैं, fundamentally कुछ change लेके आना चाह रहे हैं, I think those are the ones that might survive right now, because they're not fueled necessarily by the value of the startup. They're fueled more by the impact that they're creating. And of course, more impact you create, the higher value you're at, right? So I think that's one other element that I just add on. In my opinion, there are like 4 avenues for me. So there is a short-term, high liquid but short-term kind of investment. There is a medium-term kind of illiquid-ish, so like with some lock-in period, but not necessarily. And then there is long-term. So for me, like real estate and pension funds are like long-term, which is like my long-term safety net. So that's one element. On the medium-term, it's things like mutual funds and dividend-yielding stocks that I would put money in. And then in the short-term, it's like liquid stuff. So saving accounts, monthly TDRs, forex. I'm usually like a medium-term investor. The one area that I'm really looking forward to kind of making investments in is commodity. Right now is a really interesting time to get into stocks. And everyone keeps talking about like Pakistan डूबने वाला है. And I have like a slightly different approach. I think Pakistan डूब गया है, बहुत बारिश हुई है, and that's terrible. After this, the construction sector is going to go through a rampant expansion. And I think investing in cement, steel, all construction related stocks is going to be like a boom. And we saw that in 2012-13 wala time, where like companies like Maple Leaf and Chirat Cement सारे like एक दो रुपए के stocks मिल रहे थे. And then within a year they were like 100-120 rupees, right? Because वो debt उनका restructure हुआ, high interest rates था environment से पहले इसी तरह का, defaults आए, then the debt got restructured, and then the construction boom happened, right? So I think something like that will happen to Pakistan as well.